It's clear, Yeah. everyone? Hello, my voice is clear, everyone? Yes. Yes, sir. Chinmoy, my voice is clear, everyone? Sazadi, my voice is clear, everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. It is Yes, sir. clear for me. Okay. Okay, so recording started. Today our main topic is loopback policy. Today we will complete our group policy practicals. That is our final day for group policy, and it's very important because all this practicals in terms of group policy, whatever it is, all I have shown you here. So hope if you watch entire group policy practical, you can crack any interview for group policies. Okay, so let's understand what is loopback policy. Okay, I'm giving small example. First try to understand. This is a OU. Okay, in this particular OU there will be a computer object. Simple. In this particular OU there will be a computer object. This is another OU. In this particular OU you have a user object. Clear? Is that clear till now, everyone? What I'm trying to say, is that Yes. clear, everyone? Yes, sir. Okay. Now there is a wallpaper attached on computer OU. It's a not computer policy, it's a user policy, but it's a wallpaper attached on computer OU, and there is a wallpaper attached on user OU. I mean on this OU, and this is Sir, OU. hello. Yeah, bolo 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 bolo. বলছি যে কম্পিউটার অবজেক্ট মিন্স হচ্ছে অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট অবজেক্ট, রাইট? ক্লায়েন্ট কম্পিউটার। হ্যাঁ মানে এখানে simple things here is the computer. This আচ্ছা আচ্ছা, particular ওকে OU, this all are the computer, but ওকে they have a wallpaper policies. Now you know what is ওকে wallpaper policy, user policy or computer policy, you know already. This is হ্যাঁ a ওকে OU where all the users are there, but there is also a ওকে wallpaper policy. ওকে Okay, ওকে, just আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। is that clear? ইয়েস স্যার। GPO. So now what happened, whenever any users from this OU are log into any system from this OU, this policy is not applying. Problem I'm telling you. Where is the problem? What is the problem I'm telling you? Whenever any users are from here trying to log in any of the system which is there in this OU, this wallpaper is not applying. Instead this is are applying. This supposed to be applied, right? Here is also wallpaper policy. Now user from different OU, when they are login, this local wallpaper policy not applying. Instead their wallpaper is applied. My manager or client SM is required telling, I won't apply, I want to be applied this wallpaper, I want this policy to be applied. How you can implement? In this case you have to enable loopback processing mode on that particular wallpaper. Is that clear? Is that clear? বুঝতে পারলে Sir, চিন্ময়? loop back means লুপব্যাক পলিসি আমি তোমাকে থিওরিটা বলছি, আগে জাস্ট এইটুকুনি বোঝার চেষ্টা করো। দেখো দুটো ওইউ আছে, এই দুটো ওইউর মধ্যে দুটোতেই দুটো ওয়ালপেপার আছে, ঠিক আছে? এবার একটা ওইউর ইউজার্স যখন অন্য ওইউর কম্পিউটারে লগ ইন করে, সেই কম্পিউটার ওইউতে কিন্তু ওয়ালপেপার পলিসি আছে, ওটা না পড়ে ইউজার ওইউতে যে ওয়ালপেপার পলিসি আছে সেইটা অ্যাপ্লাই হয় বাই ডিফল্ট। এবার আমার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এই পলিসিটাকে আমি না
চালিয়ে আমি এই পলিসিটাকে অ্যাপ্লাই করাবো, সেক্ষেত্রে আমার এই পলিসিটাকে লুপব্যাক পলিসি হিসাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে, তবে গিয়ে মানে ও যে ওইতে যাবে সেই ওই ওয়ালপেপারটা ওখানে অ্যাপ্লাই হবে, তাই তো? এক্স্যাক্টলি, মানে মোদ্দা কথা আমার যে পলিসিটা পড়ার কথা ছিল, somehow this policy was override by some other policy. এবার I want that policy to be applied. In that case, I will enable loopback processing mode. I will enable loopback processing mode on this particular wallpaper policy. Then only this policy will work. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. That is loopback policy. Because many interview they will ask you what do you mean by loopback policy. So let's understand the theory. In the context of group policy object in Windows environment, there is no specific terms features called loopback policy. However, the policy setting called loopback processing that can be configured within GPU. Loopback processing is a feature that allows you to modify the way user policy are applied in specific scenario. Again, I'm saying loopback processing is a feature that allows you to modify the way user policy are applied in the specific scenario. By default, user policies are applied based on the user location in Active Directory. However, with loopback processing mode, you can force the apply of user policy based on the computer location instead. This can be useful in scenario such as public kiosk, terminal servers or shared workstation. When loopback processing is enabled in GPU, it overrides the normal user policy processing and apply the user policy based on the computer location. There are two modes available in loopback processing. One is replace, another is merge. With this mode, in replace mode, the user policy applied to the computer organizational unit replace the user policy that would have been applied based on the user's own OU. Whereas merge policy, in this mode both the user policies based on the user OU and the user policies based on the computer OU are applied. If conflict occur, the policy linked to the computer OU takes precedence. To configure loopback processing in a GPU, you can navigate the group policy management console, edit the desired GPU, go to computer configuration, policy, administrative template, system, and then enable computer user policy, group policy processing mode. Clear? Remember, loopback processing is a feature specific to group policy in Windows environment and does not have direct relationship with the concept of loopback processing outside this context. Clear? Is that clear? Yes. So let's implement that solution. It will be more clarity once you see that in lab. So what we can do in this case, we will create one domain controller. We will take two client system and two users, and I will show you how these things happen. Clear? Oh, yes, sir. Acha, one thing is that we are in group policy. After that we have DNS. After that we have a trust. After that we have a certificate. So many things we are going to learn one by one, but please make sure that all things what we have already left, please make sure that you have good enough knowledge. Got it? This is very important. Don't forget. Please update, please read, please watch old topic, because good opportunity can come any day. If you are not prepared, opportunity can go from your hand.
Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there. Your keyboard is set. Do you also type with another keyboard? Now we can go look for any updates. Type what you want to name your account. That's not a name you can use. Go ahead and try something else. Okay, now type. Hey, look, that's me. These are the settings. Okay, that's the last step. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Just a sec, I'm coming. Hold on.
Okay. Okay, now let's come on here. What I can do according to architecture. Hello, is that clear, everyone? My DC and client system has created successfully. What I can create, I will create two OU, one for computer object, another for user object. Clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what we can do, user object, computer object. Okay, I will move. Remember one thing. This is default computer object. Here none of the group policy apply. That's why we have to do customize OU and where we have to move our computer. So let's move to the computer object. And let's create few users here. These two you have created the users. Let's go to group policy. I will create two different wallpaper. I will create two different wallpaper, one for user object, another for computer object. I mean both two OU. Clear? For that only I need to download two wallpaper. So I have carried out all this wallpaper to my system, I mean DC. Clear? Now what I can do, I will copy both to where? Where should I copy? If I going to create the wallpaper, where should I copy? Small folder. Sysball folder. Very good, Chinmoy. Very good. Perfect. So it has been on shared drive, our default domain shared drive.
How I can access? Go to run // ibm.com/net logon. That is my wallpaper. Okay, fine. Let's copy computer.jpg. Another one. User.jpg. These two I need. That's what I copied it. Okay, is that clear, everyone? Let's go to your gpmc gpmc.msc. Expand domain, expand ibm.com. Okay, now as you know, where you can create group policy, where you can create group policy, where you should create the group policy. Group policy Group object. policy object. Group policy object container. Group policy object container. Okay, new policy, that is wall paper for computer OU. That is my policy name. Let's enable it. Go to settings, edit. Name is wallpaper for computer OU, but remember, this is any wallpaper policy is always user policy. Administrative template, desktop, yes. First you have to enable active desktop and jpg wallpaper, and second is desktop wallpaper. Make it enable and give the path. That's what I keep that path, copy here. Got it? So I'm here giving computer.jpg folders. I'll make it in stretch. Click apply. Got it? Achha. Create another policy. New wall paper for user OU. Right click, edit. Where should I go? User configuration, administrative template, desktop. First one, enable active desktop. After that, go to desktop wallpaper, enable. Stretch, apply, okay. Perfect. These two policy
I have created. Now what I can do, Chinmoy, এবার কি করব? পলিসিগুলো কি করতে হবে? চিন্ময় লিংক করতে হবে, লিংক। হ্যালো, লিংক করতে লিংক হবে। করতে হবে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। তাহলে ফর কম্পিউটার অবজেক্ট I will link to wallpaper for computer OU, right? And for user object I will link to user. user. Acha. Now I'll show you the problem. You know what is the problem? So basically, see how many you have OU right now. You have a OU computer object where these policies apply. Got it? And user object where this policy apply. Now I'm telling you, let's show that what is user wallpaper, what is computer wallpaper. So for that only, this is user wallpaper and this is computer wallpaper. Clear? Now I'm telling you the problem. What is problem? Problem is that whenever users log into any systems, whenever any users are log into any systems, this policy is not applied. Computer policy is not applied. Instead, this user policy applied. That means it will apply this policy. But my requirement, not this policy. This to be applied. This to be applied. Here I will do loopback processing mode, then only issue will fix. Okay, let's test. Where is my users? BAPI. So let's log in on the system with BAPI. So this user policy is applying. Again I'm showing you that here user object, here computer object. There is a wallpaper, there is a wallpaper. But whenever user log into computer object, whatever policy apply on computer object, it is not applying. Whatever policy applying on user object, it is applying. Clear? Both these cases. Even if I log off, Yes. even if I log off, Chinmay also log in with Chinmay, same policy will be applied. So every cases what are the wallpaper attached on user OU that are suppressing the wallpaper attached on computer OU. Now my manager saying I want the wallpaper to be applied for my computer OU. Whoever the users are login, wherever they are, doesn't care. Only computer, what are the wallpaper policy apply on computer, that need to be applied. Go for the solution. You got my point? You got my point? In Bengali I am saying যে পলিসিটা আমার যে ওয়ালপেপার পলিসিটা আমার কম্পিউটার ওয়ুর সঙ্গে অ্যাটাচ আছে সেটাই পড়বে। ইউজার যে কোনো ওয়ু থেকে আসুক না কেন তার পলিসি পড়বে না। বুঝতে পারলে বাপি, চিন্ময়, অমরজিৎ? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। So now what happened? Just only one setting you need to do. Just only one setting you need to do for which one? That computer policy. In this particular computer policy, just you need to enable loopback processing mode.
For that only go to edit, policies, administrative template, systems, just a second, hold on. The settings exactly I need to check, hold on. Acha. So here we will select group policy. Now here we'll found enable loopback processing mode. So we need to search it here. Configure user group policy loopback processing mode. Yes. Configure user group policy loopback processing mode. This option you need to enable. Click on enabled. Select. There's two options, merge and replace. Merge means both the setting apply. Replace means just replaced. So we will do the replace settings. Clear? Click on after that, just refresh it. After refresh it, you will see just one setting is enabled in computer configuration. User policy, whatever it is, same, just enable configure user group policy to be enabled. Now after what happened, just go to gp update / force. Done. Got it? Then after what we can do? Log in here. CMD. Do just run just after that
run the command shutdown -r -f -t -00. Now log in with any such users previously you have logged in, like Chinmay. Now what I'm expecting, that computer wallpaper to be deployed. Instead, user deployed. Is that clear? Now if I log in with any users, now log in with any users, Bapi. Just update GP because that is the old wallpaper still there. Did you see? Let's say I'm creating one users. Let's say I'm creating one user under this user object to you. Let's see. Simple. This is a new users. This is new users. Now what happened? Once they're trying to log in, see that see that এটা বোঝা গেল সবার? বুঝতে না পারলে বলো, প্লিজ টেল মি এগেন ইফ ইউ আর নট ক্লিয়ার। জিনিসটা কি হচ্ছে আরেকবার বুঝিয়ে বলে দিচ্ছি আমি সবাইকে। হ্যালো এভরিওয়ান, এভরিওয়ান ক্লিয়ার? জাস্ট টেল মি ফ্র্যাঙ্কলি, will you clear, will you understand clear what exactly the things happen? hello hello Yes, sir. বুঝতে পেরেছো Yes, sir. সবাই? সবাই বুঝতে পেরেছো জিনিসটা কি হচ্ছে আর কি হলো? অমরজিৎ বোঝা গেছে? hello Sir, basically, yeah, am I audible? yes 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 tell me. So in loopback processing, basically, we user can get access to see the another group policy object, correct? আচ্ছা,
देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, पहले चीज़ को समझो। ये दो ओयू है, ये एक ओयू है और ये एक ओयू है। इसके अंदर में कंप्यूटर है, इसके अंदर में यूज़र है, ठीक है। इसके अंदर में भी एक वॉलपेपर पॉलिसी है, इसके अंदर में भी एक वॉलपेपर पॉलिसी है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब यहाँ का यूज़र इसी कंप्यूटर में लॉगिन हो रहा है ना, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो वॉलपेपर पॉलिसी ये अप्लाई ना होके ये अप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो इसीलिए लूपबैक प्रोसेसिंग जब है, एग्जैक्टली तो लूपबैक प्रोसेस एक्चुअली, सो इस पे वो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट का भी जीपीयू एक्सेस कर सकता है थ्रू दिस लूपबैक। एग्जैक्टली। तो लूपबैक, व्हाट इज लूपबैक पॉलिसी? In GPO, loopback policy is a feature in Microsoft Active Directory group policy that allow the applications of user policies based on the computer location rather than the user location. It enables administrator to control the behavior of user setting on specific computer regardless of the user who is currently logged on. Is that clear? Is that clear? यस सर। How does GPO loopback policy work? When GPO loopback policy is enabled, the user setting configured in a group policy object linked to the computer organizational unit take precedence over the user setting in the GPO linked on the user's OU. This means that regardless of which users log on to the computer, the policy is applied. Simple, I'm telling you, simple. Whenever you have a two policies, but by default one policy is applying, another is suppressing. In this case, if you want the reverse case, that policy, if you make a loopback processing mode, it will again reverse suppress that older policy. Clear? Is that clear? Yes, sir. देखो सिंपल एक आपको मैं सिंपल आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखो आपका भी बॉडीगार्ड है, ठीक है। मान के चलो आप एक मिनिस्टर हो, आपका खुद का एक बॉडीगार्ड है, ठीक है। और आप जिस असेंबली में जाते हो वहां पे तो बॉडीगार्ड है ही आपको बचाने के लिए। लेकिन ये जो बॉडीगार्ड है ये लोग स्पेशली ट्रेंड नहीं है, लेकिन आपका जो बॉडीगार्ड है ये स्पेशली ट्रेंड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप असेंबली में जाते हो ना इसको घुसने नहीं देता है, ये वाला बॉडीगार्ड ही आपको सपोर्ट देता है। तो आप चाहते हो कि भाई ये वाला बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, ये मेरा सलमान खान वाला बॉडीगार्ड चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप अगर लूपबैक पॉलिसी ऑन कर दोगे तो ये अप्लाई ना होके ये अप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? देखो समझ में नहीं आया तो बताओ, साइलेंट में रहोगे तो मैं पता कैसे चलेगा? समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। চিন্ময় বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। বাপি বাপি বোঝা গেছে? I got confused on this bodyguard example. So you're telling user object wallpaper policy, na? If हाँ। user object enter into the computer object, then after applying that loopback, what is that processing? It will retain this user object policy, right? देखो देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब यूजर कंप्यूटर में लॉगिन करता है तो यूजर के अंदर में जो वॉलपेपर है वो ही पढ़ता है, और कंप्यूटर अंदर में जो वॉलपेपर है उसको सप्रेस कर देता है। अब अगर कंप्यूटर वाला वॉलपेपर को एक्टिवेट करना चाहते हो तो इसको सिंपल लूपबैक प्रोसेसिंग ऑन कर दो और रिप्लेस मोड में। लूपबैक पॉलिसी के दो पॉलिसी होता है ना, दो लूपबैक प्रोसेसिंग में दो
होता है, एक है मार्ज, एक है रिप्लेस। तो आप रिप्लेस में ऑन कर दो, इसको हटा दोगे, ये हट जाएगा, फिर यही पड़ेगा। यही होता है लूपबैक पॉलिसी। ठीक है, फिर से डाउट हो तो बताओ। तो नहीं, डाउट नहीं है, कंफ्यूजन है कि ये जो है ना, तो फाइनल में आफ्टर यूजिंग लुक बैक पॉलिसी विच ग्रुप पॉलिसी विल अप्लाई एंड ऑफ लुक बैक प्रोसेसिंग, यूजर ऑब्जेक्ट और कंप्यूटर ऑब्जेक्ट? फिर से डाउट, ठीक है, फिर से मैं नया पिक्चर बना के दिखाता हूँ, अच्छी तरफ से देखो। ठीक है, ये देखो, ये हो गया मेरा कंप्यूटर ओयू, जिसके अंदर में मेरा कंप्यूटर है, और इसके अंदर में मेरा एक वॉलपेपर पॉलिसी डाला है। तो ये क्या मेरा कंप्यूटर पॉलिसी है, ये यूजर पॉलिसी है? ये जो वॉलपेपर मैंने, वॉलपेपर इज अ यूजर पॉलिसी। हाँ वेरी गुड। तो मेरा ये एक और एक अलग सा ओयू है, जिसके अंदर में मेरा यूजर्स है, और इसके अंदर में जो वॉलपेपर है वो मेरा यूजर पॉलिसी है या कंप्यूटर पॉलिसी है? यूजर पॉलिसी। एग्जैक्टली। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, देखो, प्रॉब्लम यही होता है, जब यहां का यूजर, जब यहां का यूजर्स इस कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं, तो ये वाला वॉलपेपर ना आके ये वाला वॉलपेपर अप्लाई हो जाता है, और ये वाला वॉलपेपर इसको सप्रेस करके ये वाला अप्लाई कर देता है। ठीक है, ये करेक्ट। ये हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, वो बोल रहा है कि देखो भाई, मेरा कंप्यूटर में भी तो वॉलपेपर पॉलिसी है, तो उसको अप्लाई होना चाहिए ना। अगर आपको इसको देखो, आप इस ओयू में यूजर्स लॉगिन कर रहा है, तो यूजर के साथ जो वॉलपेपर आ रहा है उसका प्रेसिडेंट हमेशा लो है, तो वो हमेशा आगे जाएगा। तो ये जो वॉलपेपर पड़ रहा है ये नेचुरल है, ये आएगा ही आएगा। अगर आप इसको हटाना है तो ये वाला वॉलपेपर को अपने लूपबैक प्रोसेसिंग में मार्ज मोड ऑन कर देना है। आप जब भी ऑन कर दोगे तो ये पॉलिसी कट जाएगा, अब उसके बाद ये पॉलिसी अप्लाई होगा। मतलब जहां लॉगिन होगा वहीं का पॉलिसी अप्लाई होगा। एग्जैक्टली। तो लूपबैक पॉलिसी मेरे को इसलिए चाहिए, मान के चलो जब कोई सेम सेटिंग्स यूजर में भी है और कंप्यूटर में भी है, जब यूजर अप्लाई कर रहा है उसमें गलतली वो यूजर वाला पढ़ रहा है, तो आप चाहते हो कि ये पॉलिसी को कोई रिप्लेस ना करे, तब उस पॉलिसी को आप लूपबैक में डाल सकते हो। चीज को समझ जाओगे ना तो इंटरव्यू के क्वेश्चन में आप सवाल बोल पाओगे, चीज को समझोगे नहीं तो इंटरव्यू नहीं क्रैक हो पाएगा, सीधा बात मैं बता दे रहा हूं। इसके लिए कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। एक लैब डेमोस्ट्रेट करके दिया, समझ है, समझा चीज को, उसके बाद भी समझ में नहीं आया, मैं बंगाली में हिंदी में समझाऊंगा, उसके बाद में भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट को समझना। आप अगर नहीं बताओगे, साइलेंट में रहोगे, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि आप समझे हो कि नहीं समझे? बताओ, अभी भी डाउट है? सर अभी भी डाउट है सब कोई? ठीक है अमरजीत? আচ্ছা, यस सर, यस सर। বুঝতে হ্যাঁ পারছো? স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছো তো? খুব ইম্পর্টেন্ট স্যার জিনিস কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার, এটা হয়তো আমার বলাটা উচিত নয়, এটাকে এনফোর্স করলে কি না না এনফোর্স না, অপশনটা আছে না স্যার? এনফোর্সের ব্যাপারটা আলাদা, আমি জানতাম এটা কেউ না কেউ বলবে, বাট ভেরি গুড তুমি বলেছো। এনফোর্সের আমি সেটিংটা এটা আলাদা, আপাতত মাথা খেলছে। এনফোর্সের ব্যাপারটা আলাদা। এনফোর্সের জিনিসটা আগে আমি তোমায় বলি, এনফোর্স জিনিসটা কি হচ্ছে। এনফোর্সটা হচ্ছে হ্যাঁ, টপ টপ থেকে আসছে, আচ্ছা জিনিসটা হচ্ছে টপ থেকে আসছে, মানে টপের একটা পলিসি সেম সেটিং যদি তুমি লোয়ারে অ্যাপ্লাই করতে না চাও, তাহলে এখানে সেম পলিসি বানিয়ে ওটাকে এনফোর্স করে দাও, তাহলে এই পলিসিটা এটা দিয়ে ওভাররাইড হবে না। আর এখানে ব্যাপারটা তো আলাদা রে বাবা, এখানে তো অন্য জিনিস হচ্ছে। এখানে আচ্ছা জিনিসটা কি হচ্ছে, দুটো ওয়ুর দুটো সেম পলিসি আছে,
এবার ইউজার পলিসিটা পড়ছে, কম্পিউটার পলিসিটা পড়ছে না, মানে কম্পিউটারের যে ইউজার পলিসি সেটা পড়ছে না, সেই ক্ষেত্রে তুমি লুপ ব্যাক। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লিয়ার হয়ে। আচ্ছা, নেক্সট হোয়াট উই ক্যান ডু, হাউ টু back up your group policy. This is very important. Can a group policy backup very important? Because of, in case during your modification of group policy, there is a 1,000 chances that group policy can be crash. Group policy can be crash. That is why before you modify any group policy of your organization, always take a backup. Right click, simple, go to computer object container, এখানে গিয়ে ব্যাকআপ হবে না কিন্তু। if the group policy attached on a OU and from there you will get try to backup, it is not possible. Only backup is possible if you go to group policy object container. Clear? Then select your policy you want to take a backup, right click, backup. You have to decide your location. You have to decide your location. Select, you can create one folder over there. Better to save the folder name with group policy name. See, once you back up, see that in this folder group policy has been backed up successfully. Group policy has been backed up successfully. Clear? Now in case let's say you have changed any settings wrongly, so wrongly you have setting, you have disabled the wallpaper. Now you can, you have wrongly does some changes or your GPU has been corrupted. Just to now restore it, how you do that? Right click here, right click here, restore from backup, click on next, 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 finish. See that same policies come, same policies come. Clear? बुझा गया लो सबर? Is that clear everyone? सबको समझ में आया कि ग्रुप पॉलिसी को कैसे बैकअप लेना है, कैसे रिस्टोर करना है? Is that clear everyone? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सारे चीज ना आपको इंटरव्यू में पूछेगा। जितना तक हम लोग किया है ग्रुप पॉलिसी में, सारे के सारे चीज आपको इंटरव्यू में पूछेगा। ये चीज अगर फंडामेंटल आपको क्लियर है ग्रुप पॉलिसी, तो आप एडी का कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर दोगे, सिंपल एक्टिव डायरेक्टरी का। क्योंकि सिंपल एक्टिव डायरेक्टरी में ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू का क्वेश्चन आपको ग्रुप पॉलिसी से ही पूछा जाएगा। ठीक है? क्लियर? अच्छा, did we have harden, did we show you how to harden server through group policy? How to harden server through? No, sir. Not yet, right? Okay. No.
Okay, so that is our final topic. Remain next week. I will show you through group policy how to harden your computers, how to harden domain, how to harden computers, everything through group policies. That was our final and finish. After that, group policies finish. Did we show how to enable account lockout policies? Yes, sir. Did we show, right? Yes. Okay, perfect. Fine. Then next week we will complete that group policy. Even not only that, there's a common interview question they will ask you, that my ID is automatic got lockout. How I find out the source of the computer account lockout? That I will show you next day practicals. Clear? Okay, sir. Okay. Let me save the video file.